get heavy on my pocket. मैंने नहीं देखी, दिल चाहता है तो मेरे को नहीं पता. भैया टैटू बनाया, भैया टैटू बनाया, भैया टैटू बना रहा है. I remember the time when I was in Delhi. लग रहा है कि बीच doesn't want me to go. Good morning everybody. So I just woke up. I need to take shower and go for the early complimentary breakfast that we must not miss. So yeah, my eyes are a little puffy, my legs are hurting. If you haven't watched the previous vlog, you should, and you should know why my legs are, and if my calves had faces, we're like ugh, but sorry for the weird. So yeah, let's get ready. And we are ready. Yeah, so अभी बाल वाल थोड़ा ठीक करना है. I'm wearing this shirt. I'm gonna show you once I get ready. Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that you miss me, but you are so dumb. You know that I'm here, I'm here. Come. Got these glasses from a local store, like local market from Ahmedabad, and I really liked it. It gives me so much of Goa vibes and it goes so well with my face. I really look cool. I'm just gonna get going for the breakfast and I just don't want to miss on this thing. So yeah, कल भी मेरा breakfast miss हो गया था क्योंकि I went for this दूधसागर trek, but I don't want to miss today. So let's go. Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that. Legs are really hurting. I don't know why. मतलब I have been on track but I have not been exercising much. तो मैं ब्रह्मताल जाके आया था तब भी मुझे इतना नहीं लगा था. And it was like कि वो पूरे पत्थर वगैरह जो था, पूरा फॉरेस्ट वाला जो पाथ था, that hurts the most. तो जो पैर का जो वो होता है ना, वो I don't know what is it called. So that hurts the most. और everything is just going a little worse, but it's the last day in Goa. Tomorrow I have to catch a train at around 11, so tomorrow nothing can happen. So yeah, आज के दिन में ही है सब कुछ. So I'm gonna cover the most of the Goa, and I don't know if I'll just title this vlog as Goa in a day. So yeah, hope it helps. There is this beautiful fridge magnet, and I am a bit enthusiastic about it, so I'm just gonna take it. There's one or two, I don't know how much. There's this cute bottle, but father won't allow. I think I'm gonna go with this. It's complete, which is taking fridge magnet from Goa. मैं फ्रिज पे तो लगाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कलेक्ट कर रहा हूँ. अभी तो मैं कुछ करूँगा उसके लिए, बट या वो एक टास्क हो गया. माई फ्रेंड्स विल बी कंप्लेनिंग कि हाँ हमारे लिए कुछ लेके नहीं आया, तो घूमने जाता है ये वो इतनी जगह जा. मैं किसी के लिए कुछ, मेरा खुद के नहीं, बट तू फ्रिज मैग्नेट तो लेके आया. तो वहाँ पे मैं थोड़ा हार जाता हूँ, बट इट्स ओके. इट्स एन ऑब्सेशन टू कलेक्ट ऑल द प्लेसेस क्या फ्रिज मैग्नेट्स. सो या हो गया है वो टास्क कंप्लीट. तो एक्टिवा वगैरह हमने ले ली है, पार्किंग कर लिया है. अभी नाउ आई एम एट अगोड़ा फोर्ट मेरे पीछे. सो आई एम गोना टेक टिकट्स एंड देन आई एम गोना गो इनसाइड. You miss me, but you are so dumb. You know that I'm here, I'm here. Come when you want, you know I'll spray. पीछे ऐसे सी व्यू है. The sky is really pretty. I know
विद द अगोड़ा फोर्ट, और यहाँ पे लाइट हाउस भी है, पुराना लाइट हाउस, नया लाइट हाउस, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम लोग जा रहे हैं बिना लाइट हाउस देखे। सो चपोरा फोर्ट और यहाँ का मार्केट जो है ना, वो हम लोग मतलब बाय वॉक थोड़ा तुमको एंट्री तक जाना पड़ता है, तो वॉक में बहुत अच्छा मार्केट है। आप देख रहे हो पीछे, तो आई एम ऑलरेडी वेरी फैसिनेटेड विद दिस थिंग्स। मेरे पॉकेट में थोड़ा भारी पड़ने वाला है, बट आए हैं तो थोड़ा शॉपिंग करके जाएंगे, थोड़े सुवेनियर्स कलेक्ट करके जाएं। आई एम ऑलरेडी फैसिनेटेड विद ऑल दिस ड्रीम कैचर्स एंड स्टफ। इट इज़ गोना गेट हैवी ऑन माई पॉकेट। यहाँ पे व्यू पॉइंट है, वहाँ पे मैंने नहीं देखी थी, जाता है तो मेरे को नहीं पता जाता है वाला। तो ये लोग सब यही प्रमोट करके बेच जाता है। This beautiful beach view from here, and I'm on the top of Chapora Fort. I'm gonna go explore the next viewpoint, but this is which I like most. साथ में बहुत सारी चीज़ें ले ली। I don't know what am I going to give, what I'm going to gift people, but souvenirs from Goa. Check. तो अभी चपोरा फोर्ट घूम के हो गया, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू गो एट सम बीच, आई डोंट नो विच बीच, बट लेट्स सी। So this is Vegetar beach and we have been on that fort वहाँ पे, और वहाँ से हम नीचे आ गए हैं। बीच पूरा दिख रहा है, ओ माय गॉड, लाइक जहाँ दूर दूर तक नजर जाए पानी ही पानी। वाओ। वो वेगेटर बीच है, गोवा के लैंग्वेज में वागेतर बीच। तो यहाँ से हमारा हो गया अभी। नाउ वी आर गोइंग टू बागा बीच मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि फोर्ट दो थे, चपोरा और अगोड़ा, वो दोनों हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू गो देयर। कालिंगुड बीच, मतलब कुछ हम लोग जहाँ थे वहाँ से कुछ 8-9 किलोमीटर जितना हुआ था, तो हम ड्राइव करके यहाँ पे आ गए हैं। एंड आई एम गोइंग टू सी बीच फॉर द फर्स्ट टाइम दिस क्लोजली, गोवा का बीच। आने के साथ ही गाइस स्टार्ट हो गया है, भैया टैटू बनाया, भैया टैटू बनाया, भैया टैटू बनवाना है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज इन दिल्ली एंड एवरीबॉडी वाज आस्किंग, आई वाज लाइक बीइंग इन गोवा। हाँ, गुड टाइम्स। टिप्सी, ओके। This whole beach and this good things going on। यहाँ पे बार और रेस्टोरेंट सब है, यहाँ पे टेबल्स अरेंज है। भैया 2-3 बार मुझसे पूछ के गए इफ़ यू वांट टू हैव हुक्का, लाइक नो 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 नो। Coming through the noise, and we are here to have dinner, sorry, lunch. I'm lost and I can't find a way. पूरी खा रहे हैं हम लोग। All the lights going dark and my hopes destroyed. Help me, is anybody there? हम लोग बीच साइड पे ही बैठे थे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, तो हम लोग थोड़ा वॉक करके बाहर साइड आए और वहाँ पे कुछ खाया। और नाउ अगेन वी आर गोइंग टू द बीच। Calling out Mayday. ब्रो, यहाँ की लहरों की जो आवाज़ है,
literally. I've been to many beaches, but this is something different. लग रहा है कि बीच डजंट वांट मी टू गो होम. मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, बट आई हैड टू गो. अभी एक और बीच जाना है, फिर मुझे होटल जाना है, फिर शाम को भी शायद कुछ और पार्टी वगैरह कुछ प्लान है वो सब भी करना है, तो अभी जाना पड़ेगा. एक बीच ख़त्म करके, हाँ इस साइड में, तो एक बीच ख़त्म करके दूसरे बीच पे हम आ गए. कालिंदी बीच से निकल के हम कैंडोलिम बीच आ गए. मेरे होटल से काफ़ी नज़दीक है, विदिन अ किलोमीटर ही है, बट मैं सबसे लास्ट में अभी ये देखने आया क्योंकि ये तो पास में ही है, तो कभी भी जाके देख लेंगे. सो या coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop. हम लोग जा रहे हैं ये बीच me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain. अभी मेरे पास बहुत सारा काम है. आई नीड टू पैक माई बैग्स बिकॉज टुमारो I'll be leaving and I have to go have dinner. I need to change and there is this party of our office people going on, but I don't know. मेरा कुछ arrangement है नहीं. I don't have vehicle. I don't like taxi and कुछ भी possible नहीं हो पा रहा है. सब जगह से ना आ रही है, तो I think I should not go and I'll just be in my bed and sleep, get some like you know good food and things. So let's see क्या होता है. अभी मेरा मूड बहुत ऐसा डाइसी सा है. So let's see. चेंज मतलब शर्ट के अंदर टी शर्ट डाल के now I'm ready to go to the party. I haven't been to much party lately, so it is going to be fun. Let's see how does it go. Yeah. Say कि there is seafood. You have only heard about fish and prawns, but you look at this list. Save me, I'm running out of गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. कल रात को बहुत ज़्यादा ही मतलब भसड़ हो गई थी. हम लोग कुछ 2 नहीं आई गेस 2:30 बजे तक घर पे आए. उसके बाद मैंने शावर आवर लिया, पैक किया, तो उस चक्कर में व्लॉग करना भूल गया था. और आज मॉर्निंग काफ़ी ग्रम्पी सी हुई. 3 आवर की स्लीप में मैं उठा हूँ, कुछ 6 बजे से उठ गया हूँ. एंड नाउ आई नीड टू हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वी नीड टू लीव. सो या इट वॉज अ फन. लेट्स सी आगे क्या होता है. So yeah, that was the vlog from Goa. I hope you enjoyed the whole vlog. And actually उसमें ऐसा था ना कि it was really connected to me in like travel wise, because I started doing this travel, and when I started earning a little good, I thought I'll go to Goa like solo sort of, but it just got like in reality, and I really liked how things were changed. And yeah, it was an office trip, but I really enjoyed, and I'm looking forward to go Goa again, but not in the next year, but really soon. And let's see how it goes. I hope you enjoyed this video. If you like this video, make sure you give it a big fat thumbs up, subscribe to my channel, शेयर कर देना अपने फ्रेंड से जिसको गोवा जाना है, वो हैज़ वेरी लिटिल टाइम टू एक्सप्लोर.
And yeah, I'll see you next week most probably. Bye.